chemistry of aminoglycosides. Aminoglycosides, you know that they are nothing but the broad spectrum antibiotic. Broad spectrum means they are effective against the variety of microorganisms. They are mostly active. So aminoglycosides, they are broad spectrum antimicrobial agents and they are effective against variety of microbes like gram negative bacteria, gram positive bacteria, some fungus and all that. So they are active against the variety of organisms. So that's why they are known as a broad spectrum. They was isolated from one bacteria known as a Streptomyces griseus. So these aminoglycosides they has been isolated from this bacteria. कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेशन हुआ है उसका? Remember this bacteria. Aminoglycosides are nothing but the broad spectrum antibiotics and they are mostly effective against the gram positive, gram negative. They are isolated from Streptomyces griseus. They act by inhibiting the protein synthesis. Principally, principally they binds to 30th ribosome, 30th ribosomal subunit of your ribosome and then inhibit that protein synthesis. They also causes the misreading of RNA strand. So they causes the misreading on. तो यहाँ के इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको मैकेनिज्म के ऊपर, तो मैकेनिज्म थोड़ा सा तोड़ के देंगे आपको. जैसे क्वेश्चन में आएगा आपको कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ aminoglycosides. उसमें देंगे कि they used to bind to ribosome, they used to inhibit the protein synthesis. ऐसे दो चार ऑप्शन देंगे. So they binds to 30th ribosome as well as 50th ribosome, inhibit the protein synthesis. Particularly they causes the misreading of mRNA strand. So mRNA के ऊपर जो कोडिंग रहते हैं codons, so they causes the misreading of codons and that's why whatever protein is being synthesized, that is a faulty protein. Faulty protein. So it is, if it is incorporated into the cell wall, okay, so that will be destructed. So cell wall will die. Cell will die. So aminoglycosides, they are a broad spectrum antimicrobial agent, effective against a variety of gram positive, gram negative organism and some fungus. They has been isolated from this bacteria known as a Streptomyces griseus. Question आता है इसके ऊपर. They act by inhibiting the protein synthesis by binding to a 30th and 50th ribosomal subunit, and they also cause misreading of mRNA strand and also disturb the protein. They cause freezing of protein. They have certain common adverse effect. Most of the aminoglycosides, they will have this common adverse effect, that is a nephrotoxicity, then ototoxicity and neurotoxicity. So nephrotoxicity मतलब kidney toxicity, ototoxicity मतलब they will damage to 8th cranial nerve, it causes the deafness, and neurotoxicity. These are the some structural, these are some common features. We have already covered this part in the pharmacology. There are certain drugs under this aminoglycosides like streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamicin, netimicin, etc., etc., spiramycin. All these are derived from different bacteria. So examples of aminoglycosides and their microbial source and particularly use. Okay. So I have outlined over here. So first one is streptomycin. So it is obtained from Streptomyces griseus. Streptomyces griseus. So it is used in the treatment of tuberculosis. It is a reserved drug for tuberculosis because अगर इसके ऊपर भी अगर रेजिस्टेंस आ गया टीबी के लिए ड्रग ये नहीं रहेगा. That's why it is a reserved second line drug for tuberculosis treatment. Streptomycin obtained from Streptomyces griseus. Then neomycin. It is obtained from Streptomyces pharyngi. Streptomyces pharyngi obtained from Streptomyces pharyngi. Actually, it is a mixture of different like neomycin B and C. So mixture of epimers of neomycin B and C. It is a mixture of epimers of neomycin B and C. Particularly consist of a neosamine sugar. इसमें क्या है neosamine sugar रहेगा. Particular neosamine sugar. Neomycin में. So it okay. It is a photosensitive antibiotic, means it is a sensitive to light. अगर लाइट इसके ऊपर गिरेगा तो उसका डिग्रेडेशन होगा. सो फोटोसेंसिटिव एंटीबायोटिक, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ different infection like ear, skin, eye infection. It is also used in the burns treatment and wounds. It is also used in the ulcer and it is okay ulcer due to infected dermatose. So dermatose जो होता है टाइप का फंगस रहता है जो आपका स्किन के ऊपर अफेक्ट करे. So it is used to treat the
eye, skin, ear infections, burns, wounds, and ulcers caused by dermatodes. Okay, so neomycin. So kanamycin is obtained from Streptomyces canamyleticus. Streptomyces canamyleticus. Okay, kanamycin. Mixture of it is a mixture of three. Mixture of kanamycin A, kanamycin B, and kanamycin C. It is also used for systemic and infection of GIT. Systemic infection and infection of GIT. But it is a very toxic. So that's why it is no more used kanamycin, and its superior derivatives are used. Now next one is gentamicin. तो इस अमीनो ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में बहुत सारे ड्रग आता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया आपका, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, नेटिमिलिसिन, ओके. सो आगे भी है. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस टिपिकली यूज होता है. नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडी, इट इज अ माइक्रोबियल सोर्स एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ इपिमर्स ऑफ नियोमाइसिन बी एंड सी. पर्टिकुलरली उसमें शुगर कौन सा होता है, नियोसामाइन. देन कैनामाइसिन जो है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैनामाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस canamyleticus, mixture of kanamycin A, B, C, used for systemic infection and GIT infection, and it is a toxic. It is toxic if you use it systemically. Gentamicin. It is obtained it is obtained from Micromonospora purpura. Remember source पूछा है already. Gentamicin is obtained from Micromonospora. Okay, remember that is the name of bacteria, microbial source. Now again it is a mixture of three antibiotics: gentamicin C1, C2, and C1A. Mixture of gentamicin C1, C2, C1A. It is a broad spectrum. Okay, it is effective against gram-negative bacteria infection, particularly gram-negative bacteria infection, some gram-positive bacteria infection, and effective against the Pseudomonas aeruginosa. Topically, it is used in the treatment of bed sores. बेड सोर मतलब आपके बम के ऊपर जो छाले पड़ते हैं उसको बेड सोर बोलते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस सिटिंग एट अ वन पोजीशन और ड्यू टू कंटिन्यूअस लाइंग एट अ वन पोजीशन. जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने एक ही पोजीशन पे लेट के रहना है, सो दे मे गेट बेड सोर्स. सो दैट इज ड्यू टू इन्फेक्शन. सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट द बेड सोर्स, बिकॉज बेड सोर्स आर वेरी टेडियस टू ट्रीट. कि उतना इजी नहीं होता बेड सोर को ट्रीट करना, बिकॉज वो हील ही नहीं होता जल्दी. Healing process is very slow in case of bed sore. Also used in the treatment of eye infection and polydermata. Polydermata is a kind of fungal infection. So gentamicin. Then next one is a netimillicin. Netilmicin is obtained from Micromonas para species. Micromonas species. Okay. So it is a resistant to bacterial inactivating enzyme, because there are some bacteria they develop or they produce some kind of enzyme which can activate the aminoglycoside. कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम जो है वो aminoglycoside को इनएक्टिवेट करता है. सो बट netilmicin is a very much resistant to bacterial inactivating enzyme than other aminoglycosides. It is also used in the treatment of enteric bacteria infection and other aerobic gram-negative bacilli infection. Next one is tobramycin. Or it is also known as a nebrimycin. Tobramycin or nebrimycin is obtained from this Streptomyces tenebrarius. Streptomyces tenebrarius. Okay, source याद रखो, source पूछते हैं already. So tobramycin, Streptomyces tenebrarius. तो आप यहाँ देखो Streptomycin में क्या है, तो source में देखो T for tobramycin ऐसा. So it is a similar antibiotic like gentamicin, but activity is superior than gentamicin against the Pseudomonas aeruginosa. Also used to treat the pneumonia and osteomyelitis caused by that Pseudomonas microorganism. Osteomyelitis मतलब infection of bones. Okay? Osteomyelitis, infection of bone. Pneumonia is most commonly caused by Pseudomonas aeruginosa. Drug from this aminoglycoside is Pharmaceuticals, or it is also known as a sopramycin. Remember, sopramycin का जो cream आता है उसमें Pharmaceuticals रहता है. It is obtained from Streptomyces decaris. So it is mostly used topically for the various kind of skin infections. The next one is a paromomycin. Paromomycin is obtained from Streptomyces remosus. Or Streptomyces paromycinus. Okay.
So next one is the amikacin. It is a semi-synthetic derivative of your kanamycin. Semi-synthetic derivative of kanamycin. It is a 4-amino 2-hydroxybutyryl. So 4-amino 2-hydroxybutyryl kanamycin. That is the amikacin. So it is also used nowadays. इसका इंजेक्शंस मिलता है. So it is a L isomer is more active than D isomer. तो ये क्या है कि enantiomeric फॉर्म में होता है and out of that L isomer is more active than D isomer. It is a less ototoxic than other aminoglycosides. So this is the summary of different kind of drugs that is available under the aminoglycosides. यहाँ पे देख लो आप. So इसमें आता है आपका streptomycin often from Streptomyces griseus, eomycin often from Streptomyces faredi, kanamycin often from Streptomyces kanamyleticus, gentamicin from Micromonospora purpura, then natimycin is Micromonospora species, then tobramycin from Streptomyces tenebrarius, then triamycin from Streptomyces dicaris, paromomycin from Streptomyces remosus or Streptomyces paromomycinus. Okay. Then amikacin is semi-synthetic derivative. It is made by chemical modification of kanamycin. Okay. जो kanamycin है उसका ही semi-synthetic derivative. 4-amino 2-hydroxybutyryl kanamycin. So these are the aminoglycoside. Now SAR of aminoglycosides. Before that, okay, SAR of aminoglycosides. So they may ask question in this part. Structural activity relationship of aminoglycosides. So first of all, you should know the chemistry of aminoglycosides. Chemistry क्या है इसमें क्या क्या है? So aminoglycoside consists of 2 or more amino sugars. तो aminoglycoside में क्या रहेगा? 2 or more amino sugar रहेगा. Amino sugars joined together, joined by glycosidic bond to a sugar. ठीक है, amino sugar plus hexose molecule रहेगा उसमें. So consist of 2 or more amino sugars joined in a glycosidic bond to a highly substituted 1,3-diamino cyclohexane. So aminoglycoside consists of 2 or more amino sugar joined by a glycosidic bond to a highly substituted 1,3-diamino cyclohexane. That is the aminocyclitol. That is the ring is known as aminocyclitol. Aminocyclitol. The ring is deoxy. Okay, the ring this the 2-deoxystreptamine is the ring in all aminoglycosides except in case of streptomycin and dihydrostreptomycin. ये 2-deoxystreptamine ये जो रिंग होता है वो कॉमन होता है सब में except streptomycin and dihydrostreptomycin. तो streptomycin और dihydrostreptomycin में कौन सा रहेगा? That is nothing but the streptidine. That is nothing but the streptidine. तो बाकी सभी aminoglycoside में 2-deoxystreptamine ये रिंग रहेगा और स्ट्रेप्टोमाइसिन और डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन में ये रिंग रहेगा कौन सा? स्ट्रेप्टिडीन. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं बिकॉज केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं पूछने लायक. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेम्बर दिस ओनली कि स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स है, सार क्या है उसका बस. सो aminoglycoside consists of 1 or more amino sugar joined together. Okay, 1 or more amino sugar joined to a highly substituted hexose ring or hexane ring. So highly substituted 1,3-diamino cyclohexane by a glycosidic bond. So amino sugar ये ring 1,3-diamino cyclohexane. So they are joined together by glycosidic bond. Okay, so 1,3-dicyclohexane is also known as aminocyclitol. So the ring, now most of the aminoglycoside will have this ring 2-deoxystreptamine in the all aminoglycosides. Streptomycin and dihydrostreptomycin will have this ring streptidine. कि 2-deoxystreptamine ये जो ring है वो कॉमन होता है aminoglycoside में, but streptomycin और dihydrostreptomycin में streptidine ring होता है. We'll see the structure in the detail in our upcoming slide. Now kanamycin and gentamicin family consists of 2 amino sugar. Kanamycin में gentamicin में 2 amino sugar रहेगा attached to a 2-deoxy. Kanamycin and gentamicin family consists of 2 amino sugar attached to a 2-deoxystreptamine ring. In case of streptomycin 2 amino sugar they are attached to a ring कौन सा है? streptidine. 2-deoxystreptamine जो है वो बाकी इसमें रहेगा. Streptidine जो है वो in case of neomycin family amino sugars are attached to a again this
2-deoxystreptomine। तो देखो केनामाइसिन जेंटामाइसिन में भी क्या है 2-deoxystreptomine देंगे, नियोमाइसिन फैमिली में भी क्या है डीऑक्सीस्ट्रिप्टोमाइन है 2-deoxy, क्योंकि इसमें नियोमाइसिन ए बी सी होता है, केनामाइसिन ए बी सी होता है, जेंटामाइसिन 1 जेंटामाइसिन 1 2 एंड 1 ए होता है। हर एक का फैमिली में 2-deoxystreptomine रिंग कॉमन रहेगा एक्सेप्ट स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन में क्या है दिस स्टेप्टिडीन रिंग रहेगा। मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रक्चरल फीचर क्या होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड का? फर्स्ट वन इज अमाइनो शुगर पोर्शन एंड सेकंड इज centrally placed hexose ring. These two amino sugar portion and hexose ring, they are joined together by glycoside bond. Now this hexose ring is streptidine in case of streptomycin or dihydrostreptomycin, and in case of other it is a 2-deoxystreptomine. ये कम से कम 4-5 बार बोल चुका हो, important. Now amino sugar part. So amino sugar part सार of your aminoglycoside, उसमें फर्स्ट क्या रहेगा amino sugar part. So amino sugar part you can see here. So it is a hexose sugar 1 2 3 4 5, like 1 2 3 4 5, okay, and this 5 and it is 6, okay. So this is known as the amino sugar. You can see amino group, amino sugar. So sugar plus amino, it is a amino sugar, okay. Now इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? So what are the different possible modifications on this amino sugar? So bacteria, different bacteria produces the enzymes, as I have told you, because these aminoglycosides can develop a resistance. Bacteria can develop a resistance to aminoglycoside via different way. So first they will produce a enzyme which will inactivate the aminoglycoside. So bacteria produces the inactivating enzyme against these aminoglycosides. Now this enzyme, the enzyme targets C6 and C2 position of methyl substitution. Okay, C2 and C6 position. So this C2 and C6 position here. So they remove this amino groups. So whatever enzyme produced by bacteria against the streptomycin or aminoglycoside, the enzyme will target at C6 and C6 C2 position and methyl. Okay, and this methyl substitution at C6 increases the enzyme resistance. ये जो methyl group है यहाँ पे, ये इसकी वजह से थोड़ा सा resistance आता है। So if you increase one more methyl over here, so it will be resistant to bacterial enzyme. That is a possible modification. Again, removal of hydroxyl group at C3 and C4 position, okay, or both groups does not affect any activity. So these groups are not essential for activity. कौन सा hydroxyl group ये है? These two hydroxyl group, they are not essential for activity. So removal of this hydroxyl group or both groups, one or both groups doesn't affect the activity. Then okay, so this is the possible modification of amino sugar part in the aminoglycoside. Now second one is a centrally placed hexose ring or aminocyclitol ring. तो ये हो गया आपका aminocyclitol ring. This is known as aminocyclitol ring. तो इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो? Okay, so first add C1 acylation और acylation. C1 में acylation, यहाँ पे C1 कौन सा रहेगा आपका? ये रहेगा C1. C1 acylation is there in case of amikacin. So acylation मतलब acyl acetyl group रहेगा उसमें amikacin में. Ethylation मतलब ethyl group रहेगा इसमें ethyl cysomycin में. Okay, doesn't decreases the activity but also retain the antimicrobial potency. मतलब यहाँ पे acyl amine डाल दो या फिर ethyl amine डाल दो, that will not decrease the activity but it also retains the antimicrobial potency. तो ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है. Then in cysomycin series 2 hydroxylation and 5 deoxygenation. तो 2 hydroxylation मतलब कहाँ पे this carbon atom is known as second. 2 hydroxylation and 5 deoxylation. Deoxylation मतलब ये ऑक्सीजन रिमूव करना है. 2 hydroxylation and 5 deoxygenation causes increased strength against the bacterial inactivating enzyme. तो मतलब ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन है. यहाँ पे OH ग्रुप डालना, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन. कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप, रिमूवल ऑफ दिस ऑक्सीजन, दैट इज नथिंग बट द deoxygenation. So in the cysomycin series 2 hydroxylation 5 deoxygenation causes increased strength against the bacterial inactivating enzyme and very few alteration can be done
to a central ring without affecting the spectrum of activity. इसके ऊपर ज़्यादा कुछ changes नहीं कर सकते. So ये there are only 4 points in the SAR of aminoglycosides. ठीक है, तो अमाइनो शुगर पार्ट में क्या कर सकते हो, जो एंजाइम होता है वो कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 2 को टारगेट करता है. कार्बन नंबर 6 मतलब ये, कार्बन नंबर 2 मतलब ये, इसके अमाइनो ग्रुप को टारगेट करता है. मिथाइल सब्स्टिट्यूशन एट C6 इंक्रीजेस द एंजाइम रेजिस्टेंस. अगर यहाँ पे अगर डाल दिया कुछ मिथाइल, दैट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस. रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका C3 एंड C4, दैट डजंट अफेक्ट द एक्टिविटी. अगर आपने एक रिमूव किया या फिर दोनों भी रिमूव किए, डजंट अफेक्ट द एक्टिविटी. देन सेंट्रली प्लेस्ड रिंग मतलब ऐड वही, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अमाइनो साइक्लिक रिंग के ऊपर ऐड कार्बन नंबर 1 असाइलेशन, दैट इज इन द केस ऑफ, यहाँ पे असाइल ग्रुप डाल दिया, दैट इज प्रेजेंट इन द अमिकासिन. सो विद द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ethylation present in the ethyl cyclomycin doesn't decreases the activity, retains the activity with improved characteristics. That is the second in cyclomycin series 2 hydroxylation or 5-deoxygenation causes increased strength again inactivating enzyme. There are only these 2 points. ठीक है, एक तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर आप असाइलेशन कर सकते हो, इथाइलेशन कर सकते हो, एंड सेकंड कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल दो और ये जो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 5 का उसको रिमूव कर दो, डीऑक्सीजनेशन. सो देयर आर ओनली 4 पॉइंट्स दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ replacement is possible in case of aminoglycoside. Very few alteration can be done in a central link without affecting the spectrum of activity. Now structure of your kanamycin. It is a structure of kanamycin. So there are different enzymes produced by bacteria to inactivate the aminoglycosides. So first amino acetyl transferase, AAC. So this is the structure of kanamycin and how bacteria will inactivate this. कि बैक्टीरिया कैनामाइसिन को रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे. इनएक्टिवेशन ऑफ कैनामाइसिन बाय बैक्टीरियल एंजाइम. सो फर्स्ट अमीनो एसिटाइल ट्रांसफरेज. सो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस दिस एंजाइम अमीनो एसिटाइल ट्रांसफरेज. बैक्टीरिया में ये एंजाइम बनता है अमीनो एसिटिल ट्रांसफरेज. तो ये क्या करता है अमीनो एसिटिल ट्रांसफरेज, जैसे यहाँ पे अमीनो एसिटिल ट्रांसफरेज ये अमीनो ग्रुप को रिमूव करते हैं. सो अमीनो एसिड ट्रांसफरेज. आपको बैक्टीरिया और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है. देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया टू इनएक्टिवेट दिस aminoglycosides. So second one is ANT, that is a nucleotidyl transferase. So what will it do, ANT? So it will attack on this hydroxyl group. So they attack on this hydroxyl group and removes it. Third enzyme is a phosphotransferase. Third enzyme produced by bacteria is a phosphotransferase. Okay? So that is nothing but APH. So they will also act on a hydroxyl group. इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं आपको, but just for your information that bacteria develops the resistance to aminoglycosides because they produces different kind of enzymes which can inactivate the aminoglycosides. So ये it is a structure of kanamycin and it is inactivated by different enzyme which is shown in this diagram. कहाँ पे वो अटैक करेंगे, कहाँ पे वो inactivate करेंगे. Now structure of streptomycin. So you can see it is a structure of streptomycin. Streptomycin is made up of 3 component. पहला कंपोनेंट होगा आपको स्ट्रेप्टिडिन रिंग. Okay, so that is nothing but the amino sugar. This is the base substituted amino sugar. Okay, substituted cyclohexane ring. This is cyclohexane ring which is substituted like this. Okay, so streptidin ring, it is present in the only streptomycin and dihydrostreptomycin. Streptidin. Second part is a sugar molecule, that is a L-streptose. This is the part, L-streptose is a sugar molecule. And third part is nothing but the glycosamine. Okay, amino sugar. So N-methyl L-glucosamine. Yeah, amine है इसलिए glucose. So it is a L-glucose and N-methyl glucose. So glucosamine. So streptomycin has 3 structural component. First याद रखो streptidin ring, ठीक है. सेकंड L streptose molecule and third one is N-methyl L-glucosamine. These are the 3 structural component of streptomycin. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है. ये what are the different structural component of streptomycin? So streptidin ring, L streptose sugar, then this amino sugar N-methyl
glucosamine. Now it is a structure of your neomycin. So ये जो structure है, that is neomycin. It is a structure of neomycin. So in that you have neomycin B, neomycin C. There are two structures, neomycin B, neomycin C. तो यहाँ पे जो substitution होता है, यहाँ पे सिर्फ alternate changes है. So if R1 has a ethyl amino and R2 has a hydrogen, then it is known as neomycin B. And if R1 has hydrogen and R2 has a ethyl amino, then it is known as neomycin C. That's it. So next we'll see again structure of kanamycin family. Okay, so it is a structure of kanamycin. Kanamycin A, kanamycin B, and kanamycin C. There are three. So depending upon the substitution at R1 and R2. Yeah, this is R1 and this is R2. So in the kanamycin A, R1 is amino, R2 is hydroxyl. Kanamycin B, R1 R2 दोनों भी amino है. Kanamycin C में R1 hydroxyl है, R2 amine है. So structure of kanamycin. Then amikacin. Amikacin is nothing but it is a semi-synthetic derivative of kanamycin A. So amikacin, semi-synthetic derivative of kanamycin. Okay. So it retains the 50% activity of kanamycin A. Actually A है C है. Actually A है. Okay. L isomer of amikacin is more active than D isomer. It is a structure of amikacin. So that's it from the aminoglycosides. So we have already seen the pharmacology that chemistry was doing. Next part is nothing but the macrolide antibiotics. So macrolide, what do you mean by macrolide? Macrolide antibiotics. What do you mean by macrolide? Macro means क्या? Macro means बड़ा. Lide मतलब lactone ring. So antibiotic having large lactone ring. Okay, you can see this lactone. It is a large lactone ring. So aminoglycosides having large lactone ring in their structure. Antibiotics having large lactone ring in their structure. They are known as macrolides. Macro means large, lides means lactone ring containing antibiotics. Lactone ring, large lactone ring containing glycoside antibiotics. So that is nothing but the macrolide. So in that category you have erythromycin, azithromycin, proxythromycin. A lot of antibiotics are there. So we'll see the pharmacology of that. Okay, so macrolide antibiotics with a large lactone ring in their structure. So mechanism of action क्या है इनका? So macrolides they act by again inhibiting the protein synthesis. They binds to 50S ribosomal subunit and interferes the process of translocation in the bacterial protein synthesis. So we have seen the protein synthesis process in the detail. So in that we have seen what is meant by translocation. So it is a final step in the protein synthesis. कि आपका पेप्टिडिल ट्रांसफरेज अमीनो एसिड को ज्वाइन कर देगा, उसके बाद में ट्रांसलोकेट होता है. ट्रांसलोकेट जो अमीनो एसिड tRNA जो है वो दैट विल बी ट्रांसलोकेटेड. सो माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स दे बाइंड्स टू 50S राइबोसोम. क्वेश्चन आता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड याद रखो 30S राइबोसोम को बाइंड कर 30S राइबोसोमल सब यूनिट को बाइंड करते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करते हैं. इन एडिशन टू दैट अमीनोग्लाइकोसाइड causes the misreading of codons on mRNA. तो aminoglycosides क्या करते हैं? They binds to 30S ribosome and inhibit the protein synthesis. Also they causes the misreading of mRNAs or misreading of codons present on the mRNA. Now ये macrolide antibiotic क्या करते हैं? They binds to 50S ribosomal subunit, interferes the process of translocation. That means ultimately inhibit the protein synthesis. Again they have concentration dependent. So in the lower concentration they will act as a bacteriostatic. In the higher concentration they will act as a in the lower concentration they will act as a bacteriostatic, and in the higher concentration they are bactericidal. They are active against the bacteria, cocci. They are active against the different organisms. But bacteria, cocci, they can develop a resistance to the macrolide antibiotic by mutations. Bacteria will change its genetic makeup and will develop a resistance to this macrolide antibiotics. There is another mechanism. These antibiotics will be rendered less permeable in the bacterial cell. ये एंटीबायोटिक जैसे सेल में जाता है उसका परमेबिलिटी भी कम हो जाएगा. लेस परमेबिलिटी एंड पंपिंग आउट कैपेसिटी. बैक्टीरिया आल्सो डेवलप पंपिंग आउट कैपेसिटी अबाउट दिस माइक्रोलाइड. माइक्रोलाइड का रेजिस्टेंस डेवलप होने का मैकेनिज्म क्या है? They develop bacteria develop resistance to the macrolide by mutation, by second decrease in the permeability to the drug, third pumping out drug from cell.
ठीक है, बाहर फेंक देगा। दे आर दिस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, दे आल्सो हैव एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली आ चुका है। दे आल्सो अफेक्ट द न्यूट्रोफिल्स एंड इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनेस, एंटीबायोटिक हैविंग एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, सो following class of antimicrobial agents will have anti-inflammatory activity. So aminoglycosides they have anti-inflammatory activity, and in addition to that इसमें और एक होता है, so they also act on a motilin receptors of your GIT. जो motilin receptor होते हैं GIT में, they will act as a agonist to the motilin receptor. That's why they can cause diarrhea. याद रखो 50S राइबोसोमल सब्सट्रेट को बाइंड करेंगे, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस अफेक्ट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेंगे बैक्टीरिया। That is, bacteria can develop resistance by mutation, change in the permeability or pumping out. Then they also have anti-inflammatory activity. They also act as a motilin receptor agonist. That's why they can cause a diarrhea in the patient. तो motilin receptor जो होते हैं, motilin receptor, they are responsible for the motility of your GIT. GIT में जो मूवमेंट होता है आपका पेरिस्टाल्सिस का, उसके रिलेटेड ये मोटिलिन रिसेप्टर होते हैं. So those which will act as agonists, they will increase the motility of GIT, and those which will act as antagonists, they will decrease the motility. So this macrolide antibiotics, they are having antibody action as well as anti-inflammatory action, and as well as they produces the diarrhea by acting on a मोटिलिन रिसेप्टर. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ चुका है, मोटिलिन रिसेप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. नाउ इन दैट कैटेगरी यू हैव डिफरेंट ड्रग, लाइक फर्स्ट वन इज इरिथ्रोमाइसिन. सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रिटस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस. सो इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ फंगस स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस. It is active against variety of organisms like gram-positive cocci and penicillin-resistant organisms like streptococci, then cocci, Neisseria gonorrhoeae, then Haemophilus influenza, Corybacterium diphtheria, Neoplasma, and Rickettsia. So erythromycin is also effective against the variety of organisms which are resistant to penicillin. These drugs are also effective in the penicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. इसमें penicillin का resistance organism है Macrolides. Now absorption, distribution, metabolism and elimination. So it is absorbed from basic environment of stomach. It is partially destroyed by gastric juice. Therefore, जैसे gastric juice में इसका partial destruction होता है या फिर destruction होता है, that's why it is supplied in the form of entry coated tablet. ठीक है, ये entry coated form में देते हैं. So in the form of esters of erythromycin in the entry-coated tablet is advocated. Now erythromycin readily diffuses into body fluids but CSF level is poor. ये बाकी इसमें जाता है लेकिन CSF में कम जाता है. Most of the drugs that they are metabolized by liver and excreted through kidney. ये हो गया ADMA. Now adverse reaction of erythromycin. So it can cause allergic reaction, जैसे most of the antibiotic को होता है, including fever, dermatitis, urticaria. Okay, dermatitis मतलब skin का inflammation, urticaria मतलब वो खुजली आना, lymphoadenopathy मतलब lymph gland का size बढ़ जाना, hearing dysfunction, cholestatic jaundice मतलब क्या, यहाँ पे obstruction of bile flow, nausea, vomiting, diarrhea, epigastric pain मतलब स्टमक में क्या होगा, पेन होगा. Then erythromycin estiolate. Erythromycin estiolate causes the acute cholestatic hepatitis. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Erythromycin estiolate causes the acute cholestatic hepatitis. It will obstruct the flow of bile, especially in the pregnant women, and other salt of erythromycin are safe. जैसे देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि one of the following drug causes the acute cholestatic hepatitis in the pregnant women. उसमें erythromycin sulfate, erythromycin हाइड्रोक्लोराइड, erythromycin estiolate, erythromycin का और एक सॉल्ट देंगे erythromycin estiolate, ESTOLATE, erythromycin estiolate. It causes the acute cholestatic hepatitis. क्वेश्चन आ चुका है. What are the therapeutic uses? So as a substitute for penicillin, जिसमें पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस हो चुका है या फिर पेनिसिलिन का एलर्जी है, so अगर आप पेनिसिलिन यूज नहीं कर सकते, so in that
you can use this macrolide antibiotic erythromycin. So as a substitute for penicillin in case of penicillin allergy, okay, or in case of penicillin resistance. Then also used in the treatment of mycoplasma and chlamydial infection. So remember, erythromycin is a drug of choice in case of mycoplasma. मतलब mycoplasma मतलब fungus. Mycoplasma pneumonia. It is a drug of choice in case of mycoplasma pneumonia. It should be used in the clinical pneumonia and urogenital infection during pregnancy. So it can be used in the pregnancy also. Clinical pneumonia and urogenital infection. Urogenital मतलब जो urinary system के related जो infection है, urinary system की infection और genital organs के infection. Again, it is a drug of choice in case of whooping cough. Question already आ चुका है. Erythromycin is a drug of choice in case of whooping cough. Okay, question already आ चुका है. So drug of choice in case of mycoplasma, okay, plasma of choice in case of mycoplasma pneumonia, drug of choice in case of whooping cough. Whooping cough मतलब डांग्या खोकला. मराठीमध्ये याला म्हणतात डांग्या खोकला. Whooping cough. So it is caused by Protodella pertussis. Causative organism भी कभी पूछ लेता है. Erythromycin is a drug of choice in whooping cough caused by Protodella pertussis. Whooping cough किसको बोलते हैं? डांग्या खोकला. That is caused by Protodella pertussis organism. That is a drug of choice. Then okay, it is also used in the treatment of diarrhea due to Corynebacter jejuni. Corynebacter jejuni ये एक बैक्टीरिया होता है. सॉरी कैंपिलोबैक्टर जेजुनी. कैंपिलोबैक्टर जेजुनी मतलब आपका इंटेस्टाइन है. सो जेजनम पार्ट जो है इंटेस्टाइन का, ओके, क्या कम इलियम जेजनम, सॉरी जेजनम पार्ट जो है उसको पर्टिकुलरली वहाँ पे इन्फेक्शन करता है. कैंपिलोबैक्टर जेजुनी. So erythromycin is the second line drug of choice for the diarrhea due to Campylobacter jejuni. First line कौन होगा? Fluoroquinons. So याद रखो, drug of choice in case of mycoplasma pneumonia, drug of choice in case of whooping cough, then diarrhea due to Campylobacter jejuni. Substitute to penicillin. Drug of choice in mycoplasma pneumonia, drug of choice in whooping cough, second line drug for diarrhea due to Campylobacter jejuni, and also used in the then out of that, Spiramycin is a drug of choice for treatment of toxoplasmosis in the pregnancy. Spiramycin जो है इसका derivative है, that is a drug of choice in case of toxoplasmosis in the pregnancy. Now again, it is also used in the Legionnaires disease. So macrolide, tetracycline, fluoroquinons, they are also effective. Then also it is used in the leptospirosis used in the sexually transmitted disease like syphilis, gonorrhea. Recently the evidence has been shown that ये जो macrolide होता है erythromycin, so 1 gram of erythromycin as a single dose that can treat gonorrhea completely. जो gonorrheal infection होता है वो पूरा निकल जाएगा 1 ग्राम erythromycin अगर लेंगे आप. एक ही ग्राम लेना है, बाद में नहीं लेना. मतलब एक टाइम पे 1 ग्राम erythromycin लेना है, बाद में erythromycin का रिपीट नहीं करना है. That will completely kill the gonorrhea, means very gonorrhea. Then next one is the individual macrolide antibiotics, rohamycin. In that you have oleodomycin and tetraacetyl oleodomycin are macrolide antibiotics, but action is weaker than erythromycin. इसका mechanism जो है same है, लेकिन action जो है उसके, it is a weaker antibiotic than your erythromycin. They are rarely used. Spiramycin is a drug of choice in case of toxoplasmosis. We have seen in the previous slide also. Mycin. Okay. Then newer macrolide antibiotics. तो erythromycin वो पुराना है, spiramycin पुराना है. Newer macrolide antibiotics. They are known as azalides. Already आ चुका है. क्या होता है? azithromycin, roxithromycin, clarithromycin. azithromycin, roxithromycin, clarithromycin. देखो यहाँ पे roxithromycin, azithromycin and clarithromycin. They are known as azalides. Okay? ALIDs. They are newer antibiotics. Their advantage over erythromycin are they are resistant to acid hydrolysis. Their absorption is better than erythromycin, and they will have a more concentration in the tissue, having longer duration of action.
तो न्यूअर एजालाइड्स जो है न्यू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स और दे आर नोन एज एजालाइड्स, दे आर superior than your medicine. So they are acid resistance first, absorb from orally, gives better tissue level, having longer duration of action. Examples are roxithromycin, azithromycin and clarithromycin. तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एजालाइड, और उसमें ऑप्शन में रहेगा आपको ऑप्शन ए एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो आप बोलेंगे ये तो सभी सेम ही है, एक ही क्लास के, लेकिन नहीं। न्यूअर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है उनको एजालाइड्स बोलते हैं, जैसे रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन जो है ये ओल्डर मैक्रोलाइड है। हाँ, अगर उन्होंने पूछा कि फॉलोइंग आर द ड्रग बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड, तो उसमें सब आएगा, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, रोहामाइसिन सब आता है। लेकिन एजालाइड्स बोलेंगे तो उसमें सिर्फ ये आता है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। रिमेंबर, रॉक्सिथ्रोमाइसिन spectrum of activity and therapeutic uses are similar to erythromycin, only उसका duration and absorption better होता है। Absorb and 50%, that is rapidly absorbed, and bioavailability is 50%. Prepare with the absorption of this drug, and most of the drug is excreted in the feces. So adverse drug reaction is similar to erythromycin, but it is better tolerated and it is longer acting and acid stable. Azithromycin, the azalide derivative, differs chemically from macrolide group. In this lactone ring contains nitrogen atom. Lactone ring में nitrogen atom रहेगा, azalides में nitrogen atom lactone ring में रहेगा. Atom is similar to erythromycin with some additionally activity against gram-negative organism. It is active at pH 7.4 and above. होता है pH 7.4 and above. In addition, it is used in the treatment of avian complex virus, that means AIDS. इसके बाद में जो इन्फेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन होता है, वेरी टेडियस टू ट्रीट। एड्स के बाद में पहले ही इम्यूनिटी का कम होता है उसका, उसके बाद में अगर इन्फेक्शन जो होता है एवियन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें इट इज यूज्ड, एजिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एवियन कॉम्प्लेक्स इन द एड्स पेशेंट, then respiratory tract infection, then infection of cervix of ladies, cervicitis, all chlamydial infection. So commonly urethritis जो होता है E. coli या फिर chlamydial infections के से होता है. It is preferred for chlamydial and trichomonas infection. Respiratory tract infection में भी यूज करते हैं लोग. Next one is a clarithromycin. It is a azolide, chemically differs from erythromycin only in the methylation of hydroxyl group at 6th position. ये जब बाद में स्ट्रक्चर होगा उसमें देखूंगा. It has an activity against the mycobacter avium complex, plus influenza, gonorrhea, pneumopilaria, then chlamydia. Okay. Now this is a clarithromycin is metabolized to one metabolite known as a hydroxyclarithromycin. So clarithromycin is metabolized to one metabolite known as 14-hydroxyclarithromycin, which is also active metabolite. तो याद रखो clarithromycin का जो है active metabolite कौन सा है, 14-hydroxyclarithromycin. So clarithromycin has one active metabolite known as 14-hydroxyclarithromycin. यहाँ पे याद रखो it is a drug of choice or macrolide of choice in case of H. pylori infection. तो आपका डिओडिनल अल्सर होता है, सो डिओडिनल अल्सर इज द remarkable cause of duodenal ulcer is nothing but the H. pylori infection, and in that to use this clarithromycin. Macrolide of choice in case of H. pylori infection, also used in the upper and lower respiratory tract infection, sinusitis, typical pneumonia, skin infection due to Psoriasis pyrogens, and S. aureus. Is telithromycin. Telithromycin is a first ketolide antibiotic. It is a first ketolide antibiotic related to erythromycin. So bacterial spectrum is similar to erythromycin, but it is a potent inducer of CYP3A4. Metabolizing enzyme होता है.
CYP3A4. So 90% of drug that is metabolized by CYP3A4 enzyme. Okay. Potent inducer of CYP3A4. First reaction, blurring of vision, diplopia and myasthenia gravis. Okay. Then tacrolimus जो है, it is actually anti-cancer drug. Tacrolimus, anti-cancer drug, tacrolimus, but it also has a lactone ring in the structure. So sometimes tacrolimus is also called as a macrolide antibiotics. Sometimes tacrolimus is also known as a macrolide antibiotics. क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में याद रखो, एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है एंड यूज क्या है, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द H. pylori इन्फेक्शन, मैक्रोलाइड ऑफ चॉइस फॉर H. pylori इन्फेक्शन. बाद में बाकी का यूज जो है वो कॉमन है, लाइक अपर एंड लोअर आरटीआई, साइनसाइटिस, पिंकअप, एस ऑरेशन एंड एस पायरोजेनिस. उसका केमिस्ट्री, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लैमिडियल, legionella, mycoplasma and other gram positive organisms. Now three common structural feature. First one is nothing but the lactone ring, large lactone ring. ठीक है, इसमें क्या रहेगा, large lactone ring. Then ketone group रहेगा. Second feature क्या है, ketone group रहेगा. And these are linked together by glycoside to sugar. Amino sugar, lactone ring and ketone groups, they are together joined by glycosidic bond रहेगा. glycosidic bond किसमें होता है, lactone ring में होता है और ये amino sugar में होता है. So lactone ring attached to a amino sugar by glycosidic bond. ये इसका याद रखो, ये इसमें ग्लाइकोसाइड में भी वैसे ही कुछ होता है, वहाँ पे लैक्टोन रिंग नहीं होता, वहाँ पे अमाइनो शुगर होता है वहाँ पे. ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर, फर्स्ट वन इज अ लैक्टोन रिंग, लार्ज लैक्टोन रिंग. सेकंड कीटोन ग्रुप एंड थर्ड कीटोन रिंग ग्लाइकोसाइडिकली linked with the amino sugar. Lactone ring will have either 12 or 16 atoms, either 12, 14 or 16 atom length, partially unsaturated with olefinic groups, with ketone function. तो ये लैक्टोन रिंग क्या रहेगा, ये 12 या 14 या 16 कार्बन एटम का पार्शियली अनसैचुरेटेड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले सिस्टम रहेंगे, दैट इज नोन एज ओलिफिनिक ग्रुप्स विद द कीटोन फंक्शन के साथ में रहेंगे, दैट इज अ लैक्टोन रिंग. एंड मे हैव न्यूट्रल शुगर इन एडिशन टू अमाइनो शुगर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड to a lactone ring. That is the chemistry of macrolide antibiotics. Erythromycin is unstable in the acid medium and in inactive agent, that is hemiketal, pyroketal. तो जब erythromycin को अगर एसिडिक एनवायरनमेंट में डालेंगे, that is unstable and gives spiroketal, hemiketal intermediates. And finally अगर उसमें और भी एसिड डाला तो that will give you this spiroketal plus desosamine plus clanidones. Erythromycin का डिग्रेडेशन आप करेंगे, एसिड डिग्रेडेशन ऑफ erythromycin, फाइनली यू विल गेट दिस पार्ट, दैट इज स्पाइरोकेटल, देन डेसोसामाइन, देन क्लैडिनोज. ओके, तो erythromycin एसिड स्टेबल नहीं है, एसिड में क्या होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है, एसिड में डालेंगे तो उसको क्या बनेगा, हेमिकेटल. तो erythromycin इज एक्टिव, हेमिकेटल इज आल्सो एक्टिव. ठीक है, सो erythromycin and its hemiketal intermediate both are active. ठीक है, but spiroketal is inactive. Then desosamine is a degradation product, clandinose is also degradation product. यहाँ पे याद रखो erythromycin एसिड में अनस्टेबल है, उसका डिग्रेडेशन होता है, और एसिड में जैसे डालेंगे आप erythromycin को, पहले वो एक इंटरमीडिएट जनरेट करेगा, दैट इज नोन एज हेमिकेटल, पहले हेमिकेटल जनरेट करेगा, दैट इज आल्सो एक्टिव. हेमिकेटल इंटरमीडिएट ऑफ erythromycin इज आल्सो एक्टिव, बट अगर उसमें और pH डिक्रीज करेंगे तो स्पाइरोकेटल बनेगा विच इज इनएक्टिव, एंड और भी डिक्रीज करेंगे तो बाद में इसका ये तीनों रिएक्शन, ये तीनों इंटरमीडिएट बनेंगे, ये तीनों मिलेंगे आपको फाइनल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, स्पाइरोकेटल प्लस डेसोसामाइन प्लस क्लैडिनोज. ओके, सो ये क्या होता है बाद में देखेंगे. Now structural activity relationship of macrolide. So to increase the stability of erythromycin, आपको मालूम है erythromycin क्या है, एसिड इंस्टेबल है, एसिड में स्टेबिलिटी नहीं है. To increase the acid stability of erythromycin, so following approaches has been done. तो following efforts has been done. क्या क्या किया है उसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए. So addition of hydroxylamine to a ketone
to form a oxime that will increase the stability. So addition of hydroxylamine to a ketone to form a oxime. So in case of roxithromycin, it is done. So roxithromycin is stable. Okay. Addition of hydroxylamine to the ketone function to form a oxime, that is done in the roxithromycin. So roxithromycin is stable. Now alteration of C6 hydroxyl group, that is a nucleophilic function. Okay. So initiate the erythromycin degradation. So removal of nucleophilic function or nucleophilic character of hydroxyl group regain the antibacterial properties and stability again. Size of group is kept small so that it will not affect the binding of erythromycin to a ribosome. The compound is more active. Okay. So example is clarithromycin. जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो उसकी वजह से क्या होता है कि इरिथ्रोमाइसिन का डिग्रेडेशन जल्दी होता है. So that electrophilic character of hydroxyl group is removed, then it will become stable. And if that hydroxyl group is small, so that not to affect the binding of ribosome. So replacement or this effort has given clarithromycin. Clarithromycin is active. Then azolides like azithromycin is a semi-synthetic, okay, semi-synthetic 15-member congener of your erythromycin. नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द रिंग. ठीक है, azolides में क्या है, नाइट्रोजन क्या रहेगा, लैक्टोन रिंग में रहेगा. सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द रिंग टू एक्सपांड 14-membered precursor result in the increased spectrum of activity. तो azolides में एक्टिविटी ज़्यादा है. So these are the SAR points. Okay. Now structure of macrolides. Structure of macrolides. So first structure is of erythromycin. ये जो structure है erythromycin का है पूरा. So you can see this is known as a large lactone ring. Lactone ring रहेगा. ठीक है. अमाइनो शुगर रहेगा ये. देखिए डोसा डेसोसामाइन. Desosamine is amino sugar. Okay. Then glandinose is also amino sugar. तो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ये रहेगा ना उसका, डेसोसामाइन, ग्लैंडिनोज एक रहेगा, और इसका पहले पहले एसिड में होगा हेमी एसिटल. हेमी एसिटल इज एक्टिव, हेमी कीटल इज इनएक्टिव. देन सेकंड, ओके, देन सेकंड वन इज अ क्लैरिथ्रोमाइसिन. क्लैरिथ्रोमाइसिन इज एजालाइड. क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या है, एजालाइड. नाइट्रोजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू रिंग. Clarithromycin. Then third one is a azithromycin. So azithromycin में भी देखो नाइट्रोजन किस में, लैक्टोन रिंग में आ चुका है. फोर्थ वन इज रॉक्सिथ्रोमाइसिन. रॉक्सिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर ये है. रॉक्सिथ्रोमाइसिन में यहाँ पे जो एसिड स्टेबिलिटी के लिए जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है उसको ही ऐड कर दिया हुआ ये. So stable हो गया. So this is the structure of erythromycin, clarithromycin, azithromycin and roxithromycin. Okay, that's it. I will save the recording once. समझ लगा ये? हेलो.